it seemed like ages ago, last week, right? So we had started to talk about the kinetics of a continuum, noting here that uh, kinetics is basically the study of what causes the deformation or motion of a body or of a matter, right? In particular, in the kinetics, what we're talking about is stress. And as we discussed last time, stress is this internal measure of loading. It's the internal force per unit area. So the idea is that we make these imaginary cuts within our continuum body. And on these cuts, if we just consider an infinitesimal area and find, or not find, but doesn't define the force on it, then this force per unit area for the infinitesimal area is the stress. Now, of course, we discussed how when I'm talking about just one cut face, then that it's a force per unit area, right? So forces are vectors. So this force per unit area is also a vector, which is known as the stress vector or the traction vector. Okay. Or फिर we lengthy discussion, or in the quiz we've also discussed about it. So I hope I can skip some of the points here, which is please note the components of the traction vector are giving me the x, y, and z components, right? It's giving me the tx, ty, and tz components. It's not directly giving me the normal stress or the shear stress on this cut face. In order to do that, I actually have to project my traction vector in the direction of the normal vector to find this sigma n and this tau n. Right? So we have discussed all of these things in detail in our consideration or discussion of the quiz as well. So I'll skip skip repeating all of that again. The only thing I want to jump to directly is where we left off last time, which was basically that's exactly the discussion that I want to move to, is because when I find my traction vector just like this, which is the stress tensor multiplied by the unit normal on whichever face that I'm interested in looking at, that I'm still gonna find my traction vector or my stresses on that face in the x, y, and z direction. That's exactly why sometimes what we want to do is find the normal stresses. So not it's plane ke upar, not its x, y, and z traction components, but actually to find what is the normal stress and the shear stress on this particular face, on this new plane that I'm interested in. और यही चीज मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रही थी कि अगर हम ये ट्रैक्शन वेक्टर वाली अप्रोच फाइंड करें तो what ends up happening is that we have to go through a slightly longer route, right? What we have to do is we have to first find that traction vector, project it in the direction of n, that is to find sigma n by using t dotted with n, and then find the shear stress. मतलब ये कि I hope you guys can acknowledge that this is a slightly long-winded route. It's not so straightforward. इसीलिए the easy way that people use, or which is essentially, which is why we make use of the stress tensor essentially is this idea of the transformation of stresses. Now let me explain that. You guys recall कि अभी हमने बात की थी अपने क्विज की डिस्कशन में कि जब स्ट्रेस टेंसर हमारे पास डायरेक्टली गिवन हो. यस प्लीज. मैम लास्ट टाइम भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तो फिर उसके बाद मौका नहीं मिला. बस सिंपल बता दें. समझ मुझे आ गई है. मतलब ये लास्ट टाइम लेक्चर में भी आपने एक्सप्लेन किया था कि जब हमने सिग्मा टी को एन के यूनिट वेक्टर से, यानी जिस प्लेन के ऊपर नॉर्मल, जो प्लेन हमें गिवन है उसके नॉर्मल से जब हमने उसको डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास एक ट्रैक्शन वेक्टर आ गया. वो जो ट्रैक्शन वेक्टर देता है वो उस काशिफ एक सेकंड पहले ही मैं आपको जरा थोड़ा सा ठीक कर लूं.
ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये बस इनर प्रोडक्ट है. दिस इज जस्ट लाइक अ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट. दिस इज नॉट अ डॉट प्रोडक्ट. ओके मैम, ये जो सिंपल प्रोडक्ट होता है ये हमें उन एक्सिस के हिसाब से यस, जिस एक्सिस के हिसाब से वो यूनिट वेक्टर का वो प्लेन के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ये उस एक्सिस के हिसाब से उस ट्रैक्शन वेक्टर के 3 कंपोनेंट दे देगा. बिल्कुल बिल्कुल काशिफ. ठीक है. अब अगर मैंने उस प्लेन, यानी अब वो एक्स वाई जेड उस प्लेन पे नॉर्मल नहीं है. यस यस काशिफ, एग्जैक्टली. उस प्लेन का नॉर्मल तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है ना, जो मुझे ठीक सिर्फ है. तब मिलेगा जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूं दोबारा से. मतलब दोबारा नहीं, सॉरी, आपने मेरे भी बोला गलत. जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूं उस ट्रैक्शन वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर से, मतलब ये कि जैसे अभी आपने कहा कि उस प्लेन का जब मुझे नॉर्मल और इन प्लेन स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं, तो मुझे ये आगे की चीज करनी पड़ेगी, ये सिग्मा एन और टॉ एन निकालना पड़ेगा. ठीक है मैम, मतलब ये प्लीज गो यूनिट ऑन. वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से एक्सिस के अकॉर्डिंगली दे देते हैं. ठीक यस है यस. मैम. सो अब इसी चीज पे आते हैं कि असल में दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द shear स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन, और आई विल डिस्कस दैट विद यू इन जस्ट अ सेकंड. लेकिन सिर्फ ये बात आप लोग, आई होप कि आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब ये कि अगर मैं कट, अगर मेरी बॉडी है उसके ऊपर मैं यूं कट बनाऊं तो क्या है, यही पॉइंट पे देख रहे हैं. यूं कट बनाऊं तो फिर क्या नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस आ रहा है, या मैं ऐसे कट बनाऊं तो फिर क्या नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस आ रहा है, एंड सो ऑन. Then if I follow this method of using the traction vector and so on and then finding this is a very long-winded way. Whereas what I want you guys to notice is okay, the stress tensor, this beautiful little thing right here, उससे आप लोगों को आई होप कि अभी जो क्विज से भी यू हैव आइडेंटिफाइड कि दिस स्ट्रेस टेंसर which is उसके components which is given in those particular base directions, right? मतलब ये x1 x2 x3 के हिसाब से वो स्ट्रेस टेंसर हमारे पास है, जिसका ये सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 एंड सो ऑन इसके सारे कंपोनेंट्स थे. इससे हम डायरेक्टली जो भी हमारी कोऑर्डिनेट की डायरेक्शंस होती हैं, हम उसकी नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं और shear stresses भी फाइंड कर सकते हैं just by directly looking at it. So this is where this idea of the transformation of the stress tensor comes in. कि अगर मुझे इसी तरह आपने ये जो दूसरे में डायरेक्शंस की बात कर रही थी उनका मुझे नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस चाहिए, तो बजाय ये कि मैं हर दफा ये करती रहूं, व्हाट आई कैन डू इज, ये करती रहूं से मतलब है कि ट्रैक्शन वेक्टर निकाला, फिर नॉर्मल स्ट्रेस निकाला और फिर shear स्ट्रेस निकाला. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म माय बेसिस कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट आई वाज यूजिंग. क्यों? उससे क्या होगा कि अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करूं, दैट इज कि नाउ आई स्टार्ट टू लुक एट दैट सेम मटेरियल पॉइंट बट with a in a coordinate system which is transformed in an appropriate direction such that अब मेरे पास इनमें से कोई x1 प्राइम या x2 प्राइम या x3 प्राइम कोई एक ऐसी डायरेक्शन बन जाए जो उसी प्लेन के लेट्स से पैरेलल हो, लेट्स से कि ये x3 प्राइम हो. तो अब इसका मुझे क्या फायदा होगा? इसका मुझे ये फायदा होगा कि अब जब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं अपने स्ट्रेस टेंसर को लिखूं, अभी लेट्स कॉल दिस माय प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड देन इफ आई राइट डाउन माय सिग्मा प्राइम, फिर ऑफ कोर्स वो सिग्मा प्राइम तो मेरे पास डायरेक्टली क्या है, इट्स सिग्मा 1 1 प्राइम, sigma 1 2 prime, sigma 1 3 prime, and so on. That is, now if I wanted to just find the normal stress in the 3 direction, all I need to do is just look at this transformed stress tensor and spot के oh इसका तो ये रहा sigma 3 3, तो यही तो है जो मैं interested हूँ, normal stress in the 3rd direction. Now of course we, in order to use this sort of transformation के अगर आप अपना coordinate system में transform कर लें तो sigma prime हमें find करना है, और उसके लिए now the useful thing is कि tensors को हम लोग sorry tensors को हम लोग
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं very easily because there are just standard mathematical expressions for how tensors can get transformed as we change our basis vectors basically. और उसके लिए, and I'm not going into too much detail for this because this is completely in the realm of sort of maths or tensor की manipulation. But just take my word for it कि अगर if you want to take a second order tensor such as sigma and we want to change our basis vectors, that is if I want to view it in a new coordinate system, then how I find my transform tensor is just by using this expression right here, where I have this transformation matrix or transformation tensor even called the oh sorry, I just said it's the transformation matrix, yeah, per transformation tensor, here represented by Q. Now please note in this कि जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, अगर आप ट्रांसलेशंस करेंगे, मतलब ये कि ट्रांसलेट कर रहे होंगे खाली, दैट्स नॉट चेंजिंग द बेसिस वेक्टर्स, दैट्स जस्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ओरिजिन. So Q is not, it does not contain within it translations because that does not change our basis vectors. So what Q is actually, it's a rotation tensor या फिर it's a rotation matrix which incorporates the effect कि अगर मैं अपने original coordinate system से कुछ series of rotations करके I come to this new transformation vector, new coordinate system, then how did that happen? So वो इस Q के अंदर contained होता है. Okay. Now, as I said, in this course, we are not out to prove that this rotation matrix can transform tensors and so on and so forth. Neither are we going to be exploring कि ये Q हम find किस तरह करें अगर मेरे पास let's say सिर्फ angles given हो जी कि x1 से मैं रोटेशन की पहले अबाउट x3 एंड सो ऑन, क्योंकि हम लोगों का ये कंसर्न नहीं है एग्जैक्ट अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस करना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस किस तरह ट्रांसफॉर्म हो. फॉर अस जस्ट टेक इट कि वी ऑलरेडी नो कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं तो हमें पहले ही पता होगा कि क्यू क्या है. ठीक है जी. ये मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि असल लाइफ में obviously you guys yourself will have to find how Q is defined for coordinate transformation. But in this course, I'm not going to be focusing on that. I just want you guys to understand that we can find the stress tensor in a transformed coordinate system just by using tensor transformation, which is given right here. ठीक है. और उस टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन करने से, उस नए कोऑर्डिनेट्स में स्ट्रेस टेंसर को फाइंड करने से, इट मेक्स आवर लाइव्स मच इजियर बिकॉज हम उससे डायरेक्टली देख सकते हैं कि अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या है इस नई डायरेक्शन में, नए प्लेन पे, या फिर शीयर स्ट्रेस क्या है इस नई डायरेक्शन में या नए प्लेन पे. राइट. एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू गाइस टू फोकस ऑन. ओके. Right, so उसी की example में let me continue to treat our consider a particular problem which is something that we can view in 2D. मतलब ये कि आप consider करें a problem जिसमें जो मेरा ये original stress tensor है उसका कोई third component है ही नहीं. मतलब ये कि x3 direction में उसमें कोई चीज़ है ही, कोई stresses ही नहीं है. That means कि ये सारी terms zero हैं, ये 2-3 वाली zero होगी और 1-3 वाली भी zero होगी. That is, मैंने ये कहा ना अभी कि third direction में कोई stress ही नहीं है. So इसलिए all of these values, let's say कि they disappear. Okay, such that I'm looking at a problem which can be analyzed just within the 1-2 plane या xy plane. Okay, so it's just got stresses in the x and the y direction. That's it. No stresses in the z direction. अब इस किस्म की particular ये जो मैंने आपको example दिया ना 2D जिसमें stresses हैं just in one plane, this type of a problem has a name and that's called plane stress. How many of you have heard of this term beforehand? How many of you have heard of plane stress beforehand? Please
raise your hands if you guys have. Seven of you? 9. No, don't tell me this is again something that you guys have forgotten. Chale. Let's consider that maybe you guys have forgotten. So I have just told you what plane stress is. It's the case when the stresses in one direction are all zero. So in this case, जो मैंने problem draw out किया उसमें the stresses in the z direction are all zero, and that's why this problem is known as plane stress, because एक ही plane में उसके stresses होते हैं. Okay, plane stress. This is true, commonly true for specimens which are very thin, आमतौर पे. Okay, so for example, if I am, let's say, if I have like some sort of a sheet metal, और उस sheet metal को मैं pull कर रही हूँ from this direction, ठीक है, और इधर से fixed है, then उसकी जो, because it's very thin like so, then उसकी जो ये वाली direction होगी ना, for that I can consider that there are no Z stresses in it, right? Okay, so it's just go back and revise it a little bit again. But for us, the important point here is just कि हमारे पास 2D stresses हैं. और अब let me consider the case कि if I rotate this coordinate system x, y, और मैं किसी और डायरेक्शन में अपने normal stress और shear stress find करना चाहती हूँ, then what I'll be doing is, as I've discussed with you guys, is कि अगर मुझे किसी और प्लेन पे फाइंड करना है, लेट्स से इस डायरेक्शन में फाइंड, इस प्लेन पे फाइंड करना है, मतलब ये कि इस नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस और shear stress फाइंड करनी है, तो फिर what I'll do is कि I'll just transform my x and y coordinates in a way so that I'm aligned with this plane. ठीक, तो वही मैंने इधर किया, मैंने एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन किया which is x prime y prime. Now, as I said, just take my word for it, कि if I perform a coordinate rotation going from this xy to x prime y prime, which is anti-clockwise theta, तो ये देखे ना आप, if you look at it, I've gone, मैंने अपने एक्सिस को कैसे रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये रहा. सो इस किस्म के कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज गिवन राइट हियर. It is Q is actually equal to this thing, cos theta sin theta minus sin theta cos theta, और जो z की टर्म्स हैं वो ये दोनों 0 और z वाली just 1. This rotation matrix right here, or transformation matrix right here, is representing a anti-clockwise theta rotation about the z axis. Okay. Ma'am, one question here. Please go. ये जो Q मैट्रिक्स है, जो रोटेशन मैट्रिक्स है, और जो हमने लास्ट टाइम रोटेशन मैट्रिक्स डिस्कस किया था R, उसके भी तकरीबन सेम ही थे, मतलब cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा. तो मतलब आर दीज रोटेशन मैट्रिक्स मतलब इसी फॉर्म में होते हैं, मतलब cos sin माइनस sin और cos. Okay, so I think what you are leading to, because आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग पहले थोड़ा थोड़ा इनकाउंटर कर चुके होंगे कहीं ना कहीं. सो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बिफोर एज वेल, which is ke whenever we're performing this coordinate transformation and so on, then these things pop up. ठीक है जी. So this does pop up loads of places. कभी Q के नाम से, कभी R के, अच्छा नहीं अब मुझे याद है, ओके काशिफ आप मुझसे उसकी बात कर रहे हैं जो डिफॉर्मेशन टेंसर को हम स्प्लिट कर रहे थे, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? यस मैम, उसमें भी क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम इसी पे लगता है, जो cos और sin और माइनस sin और cos होता है, क्योंकि इसी को जब मैं इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की टर्म्स आ जाती है. मैं आपको वही बात बताती हूँ. देखें उसके अंदर बात ये है ना कि जहाँ पे कहीं पे आपकी रोटेशन आ रही है, उसमें भी तो यही कर रहे थे ना कि हम रोटेशंस को अलग कर रहे थे अपने डिफॉर्मेशन टेंसर के अंदर,
इसीलिए वो रोटेशन मैट्रिक्स उस वाले, सॉरी जस्ट फॉर एवरीबडी एल्स, जो मुझे भी थोड़ी देर लगी थी ये समझने में कि काशिफ क्या कह रहे हैं। अब मुझे याद है काशिफ बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिफॉर्मेशन टेंसर था, इसको हमने ब्रेक डाउन किया था इनटू द लेफ्ट स्ट्रेस टेंसर एंड रोटेशन मैट्रिक्स, ये किया था ना? मैम राइट स्ट्रेच टेंसर, Sorry, we had broken it down into the right stretch tensor U and the rotation matrix. ठीक, अब the reason why even this was similar was again because ये ना रोटेशन वाले इफेक्ट को अलग कर रहा था within the deformation tensor. Yes, that's why इसमें cos thetas and sin thetas and what else not was popping in. Yes, but this is not the same as this transformation matrix right here. Okay, this is something different. This is talking about the transformation of the axes of the coordinate system. Okay, whereas this was rotating a body या फिर एक particle and so on. Okay, so this is a little different, although they both incorporate within them rotations. Yeah, the effect of rotations. Okay, so unrelated. Right now, these things are unrelated. Forget about this for now. Right now, I'm talking about the transformation of the coordinate system. Okay, so just take my word for it that this is the transformation matrix for इस तरह अगर हम xy coordinates को rotate करें about the z axis. Then as we have discussed our new stress tensor, मतलब ये कि stress tensor जो कि in x prime y prime mutually perpendicular directions के stress vectors को incorporate कर रहा है अपने अंदर, is given by using this, it's found by using this transformation matrix. ठीक है जी, तो if I just apply this, or by the way please note इसी problem as I said I can view it in 2D. ठीक, why? Because कोई सिग्मा zz है ही नहीं, ना कोई सिग्मा zz है, ना कोई tau xz है, ना कोई tau yz है, none of that, right? So what I can do, इसी चीज को अगर मैं इस sort of इस तरह व्यू करूं कि मैं इधर से इसको अंदर की तरफ देख रही हूँ z से उसकी in, then I can view it like this, or I can draw my old axis along with my new axis all on the same diagram right here, which is what I've done. So I've got my old axis x or y, or I've got my faces which were my x face, minus x face and my minus y face, and similarly I've drawn out my new x prime and y prime directions. Or अब of course I'll be able to, if I'm performing my stress tensor transformation, तो जो मेरे पास नया stress tensor आएगा तो उसकी जो सिग्मा xx prime value होगी वो तो normal stress होगा ना इस direction में, और उसी तरह जो tau xy prime होगा वो इस face का shear stress जो एक है ये वाला वो होगा. Right, so let's find this sigma xx prime या sigma prime जिसके अंदर ये 4 sigma xx prime, tau xy prime and so on quantities हैं. Or clearly I've just written down all of those tensors expanded out. If I do that multiplication, or you're welcome to try this yourself, we'll get this expression for sigma xx prime, that is the normal stress in the x prime direction. और इसी तरह I'll get this expression, ये मैंने सिर्फ matrix multiplication की है, उससे मैं ये लिख रही हूँ सब कुछ. And then I'll get tau xy prime. और इसी तरह I can also write down sigma y prime if I want to, लेकिन I'm skipping that just for brevity, for the sake of shortness. अब ये चीज you guys I hope can spot that you have seen this before. You have seen how we transform or how we how we find stresses on a different cut orientation when we already know the stresses on the x in the x and y directions. And how we used to do this at undergraduate level was by something known as the Mohr circle. Okay, so I'm just showing you guys that just
by the fact that our stress tensor is actually it's a tensor sigma, जिसके ऊपर हम transformation of tensors वाली operations apply कर सकते हैं, उसकी वजह से हम कोई, ये तो अभी मैंने 2D की बात की थी ना, अगर हमारे पास कोई 3D प्रॉब्लम भी हो तब भी we can use this straightforward expression right here to find the stress tensor in the new coordinate system. Okay? Whereas all that you guys had done in 2D, in undergraduate, from most of you at least, some of you might have gone into 3D. Most of you would have just used the 2D Mohr circle. अभी मैं आपसे discuss कर भी लेती हूँ वो होता क्या था, to find these stresses in the new planes. But we were limited always to 2 dimensions. Whereas this thing right here is our actual general thing, जिसके अंदर जिससे actually वो Mohr circle भी आता था या आता है अभी भी. ठीक? This is the the fundamental principle behind it. Tensor transformation. Okay. So just for you guys who don't actually remember Mohr circle, I'm just going to explain the Mohr circle very quickly. Lekin I do want you to know that you will not be examined on Mohr circle in this course. That's not be examined on this. Okay. I just want to link it up के होता क्या था जिस ताकि सब लोगों को याद आए. So I've come to these expressions using my tensor transformation. और इससे मुझे अपने नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस अपने नए कट के ऊपर नई ओरिएंटेशन पे पता चल रहे हैं, राइट? इसी चीज को ना एक और as I've said Mohr circle से भी represent किया जाता है. Now what the Mohr circle used to be, if you guys recall, इसके हम graphically इसी tensor transformation को represent कर रहे होते थे. और how we do that graphically is कि हम ना अपने horizontal axis पे normal stresses plot करते हैं और अपने vertical axis पे shear stresses plot करते थे. और फिर what we used to do is कि we would define the Mohr circle का center जो होता है, that's at, I'll just show you what it used to be at. It's at the normal की average value. मतलब ये कि sigma x plus sigma y normal stresses है ना ये दोनों, इनकी average value जो होगी उसके ऊपर उसका center आ जाता था. फिर हम अपने कोई reference face को या reference point को draw करते होते थे. For example, if I take my x face, इसके ऊपर ये sigma x है और tau xy act कर रहा है. Sigma x है और tau xy act कर रहा है. Then I'd plot one of these reference faces on here. और अब because I've got the center and I've got my reference point, I could have used the y face as well. There's nothing wrong with that. Then I've got the center of the circle and I know what its radius is, such that I can plot the Mohr circle. And now what it allows me to do basically is कि अगर मुझे इस orientation से let's say किसी भी theta पे जाना होता था ना, तो फिर Mohr circle में आप उसी point से उसी direction में 2 theta से move करते थे. So let's say if this theta was something like this, then I'd move here by 2 theta such that मुझे ये वाले जो stresses निकालने हैं ना, वो मुझे they'll be given by, मैं 2 theta से rotate कर गई, इधर आ गई. इस point के जो भी coordinates हैं sigma x and tau xy, that would tell me what the normal stress and shear stress is on this face. Now, I don't know about you guys. This was all well and good, as I said, when we were sticking to 2D, number one. But number two, also, come on, this is pretty trivial. मतलब काफी लंबा चौड़ा procedure है. पहले जी ये बनाओ, फिर जी ये 2 theta है, sorry, फिर 2 theta rotate करो उसी direction में, फिर trigonometry use करते हुए जी ये find करें, या फिर लोगों ने ये रटे होते थे, क्या नाम है, ये expressions रटे हुए होते थे और वो इसके अंदर values input कर रहे होते थे, and so on and so on. The thing is, the real thing in 3D, मतलब ये just the so-called more complicated thing, I find to be much easier. Sirf, the issue is that we need the tools to be able to do the tensor multiplication.
और वो जाहिर है now at our advanced level, we're not going to sit around just doing everything by hand. We're going to use software to do that, either our calculator या फिर any programming software such as MATLAB or Mathematica or Octave or whatnot. I don't know, आप लोगों की अपनी preference भी होगी. The point is, our lives are now, I hope, much more simple. Wherever we have any 3D, any general, right, general problem, and we are interested in finding कि जी किसी और orientation में normal stress or shear stress क्या है, then we can use our tensor transformation just like so. Okay. Now comes to the question कि why would we be, मतलब ये why are we interested in the normal stresses and shear stresses in other directions? उसके लिए let me just remind you guys कि Mohr circle भी हम किस लिए कर रहे होते थे. The point of the Mohr circle primarily was कि we were interested in finding कि हमारे normal stress, ये देखिए normal stress का axis है, इसकी क्या maximum value आ रही है और क्या minimum value आ रही है. और इसी तरह shear stress जो यहाँ पे है, ये shear stress का axis है, shear stress की क्या क्या maximum value आ रही है. Please let me take a little breather for azan. Okay, thank you for your patience. Right, so back here. The purpose of the Mohr circle used to be to find these maxima and the minima of the normal stress and what the maximum shear stress used to be. That is, we were interested in this point, and this one, let's say. या ये वाला if you notice कि वो हमेशा horizontal axis पे ही उसका lie करता था, so this is going to be equal to the same, right? So either or. And why we were interested in this is because it's exactly these extremes of the stress
which dominate or control or determine whether failure would occur or not. Right? Of course, मतलब ये कि stress जितना ज़्यादा होगा अगर, तो उसी से हमें पता चलेगा ना कि फेलियर हो रहा है या नहीं. और इसीलिए हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता था टू फाइंड आउट कि व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेसेस इज, और कि वो किस ओरिएंटेशन पे हो रहे हैं. ठीक, ये भी इस पे भी प्लीज, आई होप यू गाइस हैव नोटिस्ड बाय नाउ कि व्हेन आई एम चेंजिंग माय ओरिएंटेशन, या जब भी आई स्टार्ट टू try to find the normal stress on another cut face, let's say for example this orientation, this cut face, so the value of the normal stress will be different than this one. ये सिग्मा x और ये सिग्मा x प्राइम की वैल्यू चेंज हो रही हैं. ये उस वक्त से हम देखते आ रहे हैं, अभी आपने क्विज में भी किया था. ठीक है, which is कि at the same point, अब याद रखें, we're still in the body, I'm still at the same point, but whether I view it with a cut like so, या फिर I view it with a cut like so, I will get a different value of the normal stress and the shear stress acting on these cuts. And what I'm interested in, okay, at this point in the body, this is my continuum body, at this point in the body, what is the maximum normal stress or the minimum normal stress and the maximum value of the shear stress? Because it's these values, the extremes of the stresses, which determine whether failure would occur at this point or not. In particular, it's worth pointing out that it depends on the type of material, whether we're interested in the normal stress or the shear stress. मतलब ये कि whether I'm interested in this value or whether I'm interested in the shear stress की maximum value. Why? Because as you guys can imagine, अगर हम कोई by the way, I'm talking about solids right now. For just give me 1 minute to talk about solids. So if I'm talking about a brittle material, let's say, brittle materials such as glass or some other ceramic, या फिर metals at low temperature, then what brittle materials tend to fail by is fracture. They tend to fail catastrophically. मतलब ये आप एक शीशे पे बॉल फेंकें, वो पूरी किरचे किरचे टूट जाएगी, right? It will fracture. And fracture के अंदर what's important is कि अगर कोई चीज के अंदर कोई क्रैक है, let's say, तो वो क्रैक किस तरह उसके थ्रू गुजर जाता है और उससे वो चीज टूट के दो हिस्सों में हो जाएगी. अब these cracks actually grow when they are pulled apart. मतलब ये pulling किस्म का ना, right? It's upwards. What I'm trying to hint at is that for a brittle material, what we're interested in is the normal stress. कि वो कितना वो क्रैक को खोलता है, normal stress ऊपर की तरफ. So whichever orientation will have the largest normal stress, अगर उस डायरेक्शन में फिर क्रैक हुआ तो फिर failure is going to be more likely. या फिर वो उस डायरेक्शन में क्रैक ग्रो करेगा. That's one thing to think about. Secondly, instead, if I have some other material, let's say a ductile material such as steel. So just for your information, ductile materials tend to fail because of yielding या फिर plasticity. मतलब ये कि उनके अंदर permanent plastic deformation होनी शुरू हो जाती है. So now, we're not going to go into why that happens, but yielding or plastic deformation occurs or is dominated by the shear stress, such that for ductile materials, we're interested to find out the maximum shear stress, whereas for brittle materials, we're interested to find out the maximum normal stress, ताकि हम ये determine कर सकें कि failure होगा या नहीं. So that's why we used to use this Mohr circle. And that's also why we're so interested in this whole bizarre thing of transforming our view
so that we can directly spot के normal stress क्या है किसी और direction में, and eventually so that we can find our maxima and minima for the normal and shear stresses and so on. Right, now let's come to it के sure तो जी please. इसका जो एक्चुअल में ट्रांसमिशन हो रही है बॉडी में उसका थीटा और मोहर में जो 2 थीटा हो रहा है ये दोनों इक्वल है? नहीं, फिजिकल में थीटा से होता है और मोर सर्कल में 2 थीटा से होता है. और सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमने चैप्टर नंबर 5 में जो किनेमेटिक्स में पढ़ा था कि प्रिंसिपल वैल्यूज जो सी है ना वो यस प्लीज गो. तो वो प्रिंसिपल वैल्यूज तो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि वो आइगन वैल्यूज के इक्वल होती है, तो हमें मोहर सर्कल फिर से दोबारा उसी चीज पे आ रहे हैं आइगन वैल्यू. मैं यही थैंक यू वेरी मच, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू लीड यू गाइस टू कि नाउ you can completely forget about Mohr circle basically, because now you already have the higher level tools to be able to find the maxima or the minima of a tensor, right? You guys already know okay, if I'm interested in the maximum or the minimum normal stresses, then what I can do is कि मैं अपने stress tensor की principal values निकाल लूँ. Exactly right, यही मैं आप इधर ही आ रहे थे. The point Mohr circle का मैंने आपको जैसे बोला था कि वो मैं आपसे that's not examinable in this course. This is not a that's not the point of discussing it. The point is to relate it to what you know के पहले से हम transformation किस तरीके से करते आ रहे थे, and now you can understand के why we do it, or what this new 3D sort of higher level version of it of stress transformation is. Right, so उसी तरह we can find our maxima or the minima of the stresses just by finding the principal values of our stress tensor. ठीक है, और as we had discussed previously for the case of the strain tensor, the infinitesimal tensor, उसी तरह हम अपने stress tensor को लेके उसकी उस tensor की principal values निकाल लें तो हमें अपने principal stresses मिल जाएंगे. Now, I just do want to point out to you कि what do the principal stresses represent. The principal stresses, as we have discussed previously, they're going to represent the maxima or the minima of the normal stresses for our point in the material, right? So जिसका मतलब ये कि if I physically speaking, what happens when I start to look at the principal stresses is I end up transforming my coordinate. That is, I end up making cuts at that point in such a way that I only end up with normal stresses on the cut faces. So अभी ये देखें जो हमारा original stress tensor था 1, 2 और 3 डायरेक्शन के अंदर वो ये था. और अगर मैं इसको इसकी principal values के version में represent करूं, then I represent it using this thing. That is, I only get the normal stresses right here. जब आप principal values निकालते हैं तो हम इसी stress tensor को transform कर देते हैं in such a direction, in such a in such a view, yeah, in such a coordinate axis. And when I now consider my x2 prime face, yeah, x3 prime face, yeah, x1 prime face, but when I look at these planes, then for these ones, I only get normal stresses. और ये जो normal stress हैं, sigma 1, sigma 2, sigma 3, these are going to be the maxima or the minima of the normal stress at that point. And these are the ये sigma 1, 2, 3 are the stress tensor's principal values. Okay. Now, just one thing to point out here, कि जो principal values as far as the case for the strain tensor, उनको ना अक्सर लोग एक ही subscript से represent करते हैं. If you notice here, I've got sigma 1, sigma 2, sigma 3. Now,
प्लीज नोटिस वो वन सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करने का मकसद ये टू आइडेंटिफाई कि ये मैं सिग्मा 1 1 या सिग्मा 2 2 की बात नहीं कर रही, उसको हम स्पेशल वन सबस्क्रिप्ट दे रहे हैं बिकॉज दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज. ओके, whereas सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3 तो ये वाला था, इसके जो नॉर्मल स्ट्रेसेस थे. ठीक, so be careful that there's just one subscript being used to represent principal stresses. और इस तरह जब हम उसको खाली यूं लिख देते हैं ना, तो this gives us no information कि वो orientation exactly क्या है for this sigma prime. मतलब ये कि ये किस orientation में sigma 1 है और किस orientation पे sigma 2 है और किस orientation पे sigma 3 है. But the only neat thing turns out to be कि these three principal directions या फिर these three cut faces on which these maxima or the minima of the normal stress occurs, they are actually mutually perpendicular to each other. ठीक है जी, और इसीलिए because they are mutually perpendicular to each other, I can represent that same point, this same stress state in terms of this way, just in terms of the principal values. क्योंकि ये तीन फिर से मेरे पास mutually perpendicular directions हैं और उनका stress tensor, stress vector sorry, ये just represented with its normal vector होता है. ठीक, I am sorry अगर if is this part clear to everybody कि principal stresses give us the maxima or the minima of the normal stresses, और जिस प्लेन के ऊपर वो नॉर्मल स्ट्रेस ये मैक्सिमा और मिनिमा एक्ट कर रहा होता है उसके ऊपर कोई shear स्ट्रेस नहीं होता. इसीलिए if you look closely here, इधर ये shear stresses थे ना, ये सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 3, इनके ऊपर कोई shear stresses एक्ट नहीं करते. On the principal planes या in the principal directions you only have normal stresses acting. ये बात आई होप कि आप लोगों को अपने मोर सर्कल से भी थोड़ी बहुत याद हो कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज थी, ये जो मैक्सिमा था, इधर I'll have to erase this. Look at this point B. इसके ऊपर shear stress 0 है, this y component. That's what I'm trying to point out here as well. कि the planes that correspond to the maxima or the minima or the normal stresses, that is the planes that have the principal stresses, they only have normal stress. They do not have any shear stress. Okay, is this ये बात कुछ, do you guys have anything to say about it? Can someone please at least No. confirm कि समझ आ रही है बात? जी मैम, आ कुछ रही हद तक आ गई और बाकी फिर आ जाएगी पढ़ के एक दफा. Okay, thank you. Okay, right. So now comes to the point कि अब clearly these maxima or the minima of the normal stresses are extremely important to us because they determine failure. So how can we find our principal stresses? या तो अगर 2D problem हो तो हम Mohr circle use कर लें, लेकिन I'm telling you कि we are moving on to more complicated things, so our life is going to involve 3D problems. So we are going to revert to using our tensor operations where we know that the principal values can be found by solving this equation, right? I hope कि ये थोड़ी familiar लग रही हो सबको. Where for a tensor, if we solve this particular equation, this cubic equation, जो आई थी हमारे पास when we were considering के हमारे पास lambda n ये करके, yeah, I've discussed this. I'll put in the slide number somewhere. Just a second. It'll come up where this is coming from. So you can go back to look at that lecture beforehand. I think it was lecture 5. पिछले principal strains में भी हमने इसी चीज पे बात की थी, right? So
The idea is for this, we need this I1, I2 and I3 for our stress tensor. और ये I1, I2, I3 जो थे, ये if you recall, they used to be the scalar, principal scalar invariants of a particular tensor, और इनकी ये values होती हैं. This is always going to be this for any tensor. I1 is always going to be its trace. I2 is always going to be the determinant of the co-matrices in there, this thing right here. And I3 is going to be always going to be the determinant of the tensor. You don't need to memorize this. This will always be available to us in our lives. We can just Google what the principal scalar invariance की expression क्या है for a tensor. Right. And then once you've got our I1, I2, I3, we pop those back into this equation and solve our cubic equation. See, it's right there, to find what our lambdas are. Now note that cubic equation ka matlab hai we'll get 3 roots. So we'll get the 3 principal values. And for the stress tensor, those are then the principal stresses of our at that point in space. And also if we want to find कि इसकी direction क्या थी actually exactly, then हमें इसका थोड़ा सा एक level आगे जाना पड़ता है, which we have not considered in this course, which was कि हमें अपना ये जो eigen vector होता था, we'll also have to find that eigen vector, because the eigen vector tells us the direction in which these eigenvalues are acting. Okay. But just note that if you ever do need it, you can find the eigenvector, okay? Right. So let me jump into doing one. Oh, sorry, there's more actually. Yep, I forgot. Which is that from the principal stresses, we're finding our maxima and the minima, the maxima and the minima of the normal stress. तो ये तो ठीक है, हमारे ब्रिटल मटेरियल्स का काम आसान हो गया, उनका फेलियर हम डिटरमिन कर सकेंगे. But what about the ductile materials, where if you guys remember, I told you that it's the shear stress which is more important. Now, the nice thing about the maximum shear stress is that actually it's just a function of the principal stresses. Again, I have to go back to your Mohr circle just to remind you guys a little bit. कि ये जो tau max है ना, ये it's this vertical height right here in the Mohr circle, which if you notice it's actually what? It's the radius of the Mohr circle, right? So radius को निकालने के लिए what can I do? I can find the diameter, right? और इस diameter को divided by 2 कर लूँ अगर, तो I'll get my radius and hence I'll get my tau max. So clearly from here, I can spot, I hope, that this tau max is actually equal to this sigma 1 minus sigma 2, ताकि मेरे पास ये पूरी length आ जाए, divided by 2. So it's actually sigma max minus the minimum normal stress, या फिर minimum principal stress divided by 2. और ये thing ना, this thing, I'm not gonna expand on this any further, but basically this is also the same case for 3D, such that when we're talking about our case, the problems that we're going to be interested in, then even again अगर हम अपने यही principal stresses find कर लें, sigma 1, sigma 2, sigma 3, और फिर इनमें से if we just identify कि हमारा sigma max और sigma min क्या है, then this same equation holds true even for 3D. So that's all that we need to do once we've found our once we've already found our, I ignore that, once we've already found our principal values. We just need to find, yeah, identify कि उन principal values में से maximum और minimum क्या है, and subtract the 2, divide by half, divide by 2, sorry, to get our maximum shear stress.
Right. So let's look at an example where we're going to use the technique which is of importance to us now. ताकि हम transformation of stresses करके we can find what our normal stresses and shear stresses are at different points, but we can find our maximum and the minimum of the normal and shear stress. Just 2 minutes more. Actually, I think it's already been quite a lot. So what we'll do is we'll pick up from this example next week. Okay, guys? Yes, ma'am. Okay, ma'am. ताकि थोड़ा सा इसका recap भी हो जाएगा about principal stresses and maximum shear stress. और as you might notice, मेरी आवाज़ बिल्कुल ही बैठने वाली है अनकरीब. So we'll pick up from this example next time. It is 7:50. I'm still here if you guys have any questions in particular related to what we've done today, but also from the previous quizzes that we've discussed so far. So please let me know. मैम अभी जब आप हमने मोहर चीज डिस्कस की थी कि मैक्सिमम shear stress is a function of something. वो क्या चीज थी वो काइंडली एक दफा दोबारा बता दें. Maximum shear stress is a function of what? The maximum shear stress is just a function of the principal values. और कि principal values के अंदर maximum और minimum क्या है. याद रखिए कि जब हम stress tensor का principal values निकाल लें such that we can represent it just using those. This sigma 1, sigma 2 or sigma 3. All of these shear stresses would then be 0, right? Because as we discussed, principal planes पे कोई shear stress नहीं. So it just turns out, इसकी explanation के लिए मैं आपको कही थी कि Mohr circle को देखें. It turns out कि I can use these principal values to also find my maximum shear stress. The only thing I need to do is कि इन तीनों में से I have to identify what my sigma max is and what my sigma min is. Oh, by the way, please note कि इसके अंदर the minuses feature, right? For example, if I have 100 minus 20 minus 80, तो इसके अंदर maximum value ये है और minimum value ये है. ठीक है? So in दोनों principal stresses से then I'll be able to find my maximum shear stress just by using this expression right here. Thank you, ma'am. No problem. There was another question. मैम हमने मोहर सर्कल जब पढ़ लिया था उसके बाद हमने कुछ फार्मूले भी पढ़े थे जो फार्मूले से वो वेरीफाई करता था. इवन के आर का फार्मूला भी पढ़ा था और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने का भी फार्मूला पढ़ा था. लेकिन वो पूछना ये चाह रहा था कि ये 3D में भी फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं या फिर है. Okay, good question. Basically वो जो सारे फॉर्मूले निकल रहे थे ना हमारे, वो हो क्या रहा था? वो हो ये रहा था कि हमने जो let's say स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारी, ये वाली, उसको अगर हम 2D में करें ना तो आपको मैं I showed you right कि we get the expression for the normal stress in the new direction in the shear stress. अब इसी तरह आप इसी को आगे कंटिन्यू करें तो क्योंकि मुझे सिग्मा xx प्राइम भी पता चल गया, टॉ xy प्राइम भी पता चल गया और सिग्मा yy प्राइम भी पता चल गया. तो अगर मैं अब इस अपने सिग्मा प्राइम या फिर एक्चुअली जिस सिग्मा की ही प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल लूं तो मेरे पास वो एक्सप्रेशंस आ जाती हैं फॉर जो आपने कहा आर की या shear stress की एंड सो ऑन. नाउ द थिंग इज 2D के अंदर वो प्रिंसिपल वैल्यूज, इस स्ट्रेस टेंसर की प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना और लिखना इन एक्सप्रेशंस इज इजी. ठीक,
मतलब हम कर सकते हैं, हमारे पास अननोन्स होते हैं सिर्फ जी, ये सिग्मा एक्स एक्स, टॉ एक्स वाई, सिग्मा वाई वाई और थीटा। इन 4 चीज़ों के टर्म्स में वी कैन राइट डाउन our principal values, our sigma average, and so on. But imagine the case when I have a full-blown 3D problem. ठीक है, उस केस में तो how many unknowns या फिर how many variables I'm gonna have, right? I'm gonna have मेरा ये सिग्मा जो स्ट्रेस टेंसर होना है, that's gonna be sigma xx, sigma xy, sigma xz, और इवन इफ आई यूज द फैक्ट जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया वो सिमेट्रिक है, तो स्टिल आई हैव फार मोर वेरिएबल्स इन हियर। तो इस टेंसर का प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना या फिर इन अदर वर्ड्स वो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 निकालने की जो एक्सप्रेशंस है ना, दे आर जस्ट फार टू रिडिकुलसली कॉम्प्लिकेटेड. Or also, I forgot to mention in this, I did not talk about Q. Rotation या transformation tensor जो था या transformation matrix. इसके अपने मसाइल हैं. अभी 2D में तो हमारा काम आसान हुआ है ना, सिर्फ एक एक्सिस के about थीटा है. 3D में that's not gonna be the case. 3D में at least you can always basically there will be more than one angle of rotation. Clearly. ठीक? So my point is sigma is far too complicated and Q is far too complicated कि 3D के अंदर हम उसका solve करते करते एक general expression अगर लिखने आएंगे ना वो principal values के लिए, that is lambdas के लिए, that will just take up this whole page if not more. So that's why sure you can find it and I'm sure you'll be able to find it in a textbook as well. But why do that when we can very conveniently express everything in such shorthand कि आप particular problem के लिए find कर लें, आप matrix या tensor multiplication कर लें, आपको वो general formula ये वही general formula तो ही है except just represented in tensor form, right? So my very long-winded answer is basically कि आप कर सकते हैं if you want to find those general expressions in 3D, but they are just going to be unbearable. So there is no point, and that's why we like to stick to these nice little tensor transformations and find whatever we want to do, we can do through this. Yeah, from the principal values. Yep. Okay, any other question?